Hello and welcome to my YouTube channel Mr. Linguist. Today in this video lecture we will be dealing with monolingualism, bilingualism, multilingualism. We will also take a look at the imposition of a monolingual policy. We will also take a look at the negative impacts of monolingualism. We will also see how bilingual language policies are commissioned in Australia and New Zealand. So let me start with monolingualism. Monolingualism is also called monoglottism, or more commonly called monolingualism or unilingualism. It is the condition of being able to speak a single language and is opposed to multilingualism. Source Wikipedia. A person who speaks one language called a monolingual, and a society or country where only one language is spoken is called monolingual society or country. America is called monolingual country. अब ये जो वर्ड मोनोलिंगुअलिज्म है, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये मोनो और लिंगुअलिज्म में ब्रेक होता है. मोनो मीन्स सिंगल, लिंगुअलिज्म मीन्स लैंग्वेज, मीन्स यूज ऑफ सिंगल लैंग्वेज इन अ सोसाइटी और कंट्री इज कॉल्ड द मोनोलिंगुअलिज्म. या फिर हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन जिसमें हम कोई भी एक लैंग्वेज यूज़ करें तो उस कंडीशन या उस सिचुएशन को मोनोलिंगुअलिज्म कहा जाता है. और ये मोनोलिंगुअलिज्म मल्टीलिंगुअलिज्म के अपोजिट है एंड इट इज़ सोर्स्ड अगेंस्ट विकिपीडिया. अब ऐसा बंदा या फिर कोई पर्सन जो कि एक लैंग्वेज बोलता हो तो उसको हम मोनोलिंगुअल बोलेंगे या उसको हम मोनोलिंगुअल कहेंगे. या फिर कोई ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एक ही लैंग्वेज पे फोकस किया जाता हो या एक ही लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता हो तो सोसाइटी को हम मोनोलिंगुअल सोसाइटी कहेंगे. सेम इज़ द केस विद द कंट्री. अगर कोई कंट्री एक ही लैंग्वेज पे फोकस करती है, एक ही लैंग्वेज पे एम्फेसिस करती है या फिर एक ही लैंग्वेज पे काम करती है तो वो कंट्री मोनोलिंगुअल कंट्री होती है. दिस इज़ सो ट्रू इन केस ऑफ अमेरिका. अब अमेरिका को हम मोनोलिंगुअल कंट्री कहते हैं क्योंकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करती है, यानी कि उनका एम्फेसिस यही होता है कि हम मोनोलिंगुअलिज्म को प्रमोट करें, यानी कि वो इंग्लिश को प्रमोट करते हैं क्योंकि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट, पावर एंड आल्सो मिलिट्री ऑफ द यूएसए. देन कम्स बाइलिंगुअलिज्म. Bilingualism is the ability of an individual or the members of the community to use two languages effectively. If a person speaks two languages, he is called a bilingual. दो लैंग्वेजेस की बोलने की सलाहियत को हम बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं. और ऐसा बंदा जो कि दो लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करे, राइट, उनको मतलब कि उस लैंग्वेज को लिख सके, बोल सके या फिर सुन सके या फिर पढ़ सके, तो उस बंदे को हम बाइलिंगुअल भी कहते हैं और इस सिचुएशन को हम बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं. अब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे दो लैंग्वेजेस को एम्फेसिस किया जाता हो या फिर दो लैंग्वेजेस पे फोकस किया जाता हो तो उस सोसाइटी को हम बाइलिंगुअल सोसाइटी कहेंगे. एंड दिस इज़ सो ट्रू इन केस ऑफ कनाडा एंड न्यूजीलैंड, क्योंकि इन कंट्रीज़ में जो इंग्लिश का ट्रेंड था या फिर इंग्लिश की हेजिमनी थी उसको डिस्प्यूट किया जा रहा. मीनवाइल के हेजिमनी ऑफ इंग्लिश इज़ डिस्प्यूटेड इन दीज कंट्रीज़, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज का वो पावर नहीं रहा इन कंट्रीज़ में जो पहले था, क्योंकि इन कंट्रीज़ में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर गवर्नमेंट ने और लैंग्वेजेस भी इंग्लिश के साथ साथ प्रमोट कर दिए हैं, यानी कि बाइलिंगुअल पॉलिसीज अडॉप्ट कर दी हैं. तो इन कंट्रीज़ को हम बाइलिंगुअल कंट्रीज़ भी कहते हैं, मतलब वो कंट्रीज़ जो दो लैंग्वेजेस को प्रमोट करें. जैसे कनाडा दो लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश और फिर फ्रेंच को प्रमोट करता है. न्यूजीलैंड इंग्लिश और माओरी लैंग्वेज को प्रमोट करता है. देन कम्स मल्टीलिंगुअलिज्म. Multilingualism is the ability of an individual speaker or a community of speakers to communicate effectively in three or more languages. A person who speaks many or more than three languages is called a multilingual. तीन या तीन से ज़्यादा लैंग्वेजेस की बोलने की सलाहियत को हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं और वो शख्स जो तीन से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोले उसको हम मल्टीलिंगुअल कहते हैं. तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन मोनोलिंगुअलिज्म, बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म का. नाउ वी विल टेक अ लुक एट द इम्पोजिशन ऑफ अ मोनोलिंगुअल पॉलिसी. आई वांट टू क्लियर हेयर दैट इन द अर्ली पीरियड
The USA valued and warmly welcomed the linguistic diversity. But however, in the late 19th century, it gave rise to the promotion of a monolingual tradition and emphasis on standard English as the mark of reason, ethics, and aesthetics. The tolerance of diversity, which had characterized the only national history, declined sharply. अब पहले क्या था कि शुरुआत में अमेरिका ने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को वैल्यू भी दिया और उसको वेलकम भी किया, बट 19वीं सदी में अमेरिका मोनोलिंगुअल ट्रेडिशन की तरफ शिफ्ट हो गया और उन्होंने स्टैंडर्ड इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए मोनोलिंगुअल पॉलिसीज अडॉप्ट की. And the impact on the cultures and languages of the indigenous peoples of a monolingual policy has been devastating. और ये जो monolingual policies थी, तो इन monolingual policies का indigenous people यानी कि जो वहाँ के native people थे, native residents थे, उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर पे monolingual policy का बहुत सारा असर था. मतलब कि they were losing their language and their identity, also their culture, with the imposition of a single language on them, or with the imposition of a monolingual policy. This is so true in the case of Navajo children. Like they were the children who belong from the Navajo tribe of America, who has different language and culture. But due to the imposition of a monolingual policy, they had to learn all the concepts, values in foreign language, like in English language, because it was foreign to them. They were supposed to learn lifestyles which were in foreign, and they were taught by human models which were also foreign. So overall, the intention behind this kind of schooling is to mold the Navajo children to be like the members of the predominant Anglo-Saxon mainstream culture. कि इस मोनोलिंगुअल पॉलिसी का मेन मकसद या मेन मोटिव यही था कि जो नेवाजो चिल्ड्रेन हैं उनको मोल्ड किया जाए एंग्लो सैक्सन मेनस्ट्रीम कल्चर में, और इस तरह की स्कूलिंग से बच्चों में कन्फ्यूजन होगी कि वो घर पे एक तरह के वैल्यूज़, एटीट्यूड्स या बिहेवियर सिखाए जाते हैं और स्कूल में उनको कम्प्लीटली डिफरेंट या फिर स्कूल में कम्प्लीटली अपोजिट चीज़ें सिखाई जाती हैं. सो दे बिकम कन्फ्यूज्ड. उसके अलावा वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खो बैठते हैं, यानी कि दे लूज़ देयर नेवाजोनेस. दे आल्सो फेल इन क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो उनको फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में सिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, वो उनसे या उनकी लैंग्वेजेस से डिफरेंट हैं, तो वो क्लास रूम की लर्निंग एक्टिविटीज़ में भी फेल हो जाते हैं. नॉट ओनली दिस बट दे आल्सो लूज़ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, कि भाई उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस कितनी है, या फिर उनका जो कल्चर है वो क्या है. So they also lose their language and culture at end. So we can consider monolingualism as a threat to minorities. और इसी वजह से जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा है या फिर न्यूजीलैंड है, वो माइनॉरिटीज़ को या माइनॉरिटी की लैंग्वेज को या कल्चर को फेवर देते हैं, और नतीजन उन्होंने लैंग्वेज पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जिनमें उन्होंने चार्टर्स बनाए, एंड दे ट्राइड टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द लैंग्वेजेस ऑफ द माइनॉरिटीज़. अब कनाडा में क्या हुआ, 1969 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया, यानी कि अब वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश नहीं बोली जाती, यानी कि वहाँ पे मोनोलिंगुअलिज्म ट्रेडिशन नहीं है, वहाँ पे अब बाइलिंगुअल ट्रेडिशन है, क्योंकि वहाँ पे दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, फ्रेंच और इंग्लिश. वहाँ पे कोई भी ऑफिशियल मीटिंग होती है या कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलता है तो वो दोनों लैंग्वेजेस में निकलता है. इसलिए मोनोलिंगुअलिज्म का ट्रेंड कनाडा में ख़त्म हो चुका है, एंड दे आर स्ट्रांगली फॉलोइंग द बाइलिंगुअल ट्रेडिशन और बाइलिंगुअल ट्रेंड. सेम इज़ द केस विथ न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में ना सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है बट उसके साथ साथ माओरी लैंग्वेज भी बोली जाती है. Maori language is the official language along with English in New Zealand, and New Zealanders are given right to speak in Maori or English language in public places, and this way New Zealand is also protecting the language of the minorities and has given a choice to the inhabitants to go with one language or both while speaking in public.
So in this way, different countries are promoting and protecting different languages of the minorities. Also, they are protecting the regional languages. It also happened in the Wales, a country of the United Kingdom, whose language was about to demise, but with the strenuous efforts of the government and favor of educational institutes, it regained its status. And now it is actively used in the education system. Also, it is used in courts and culture. So whenever you go to Wales, you will find signboards on the road both in English and Welsh language. So in this way, countries are protecting and promoting the bilingualism because they consider monolingualism as a threat to the minority languages and the regional languages. So this was about the terms monolingualism, bilingualism and multilingualism. I hope you enjoyed the lecture. Thank you and Jazakallah.